Hello everyone and welcome to my channel Python AI Lab. My name is Namira Sheikh and in today's video I'm going to explain you each and everything related to print function. Print function के साथ जो भी parameters होते हैं, what are the use of that parameters and everything with the help of example we are going to see in this video. So basically print क्या है? Print कुछ नहीं है, बस एक मैसेज जो आप प्रिंट फंक्शन को दोगे वो मैसेज वो स्क्रीन पर प्रिंट करने वाला है. दैट्स इट. So let me check the examples. As you can see with this icon, I, uh, I will insert the new cell, right? So this is the use of this icon, plus icon. So let me start with the examples. Print. Let me take here a hello world. With the help of this icon I will run this cell, or you can make a use of keyboard shortcuts, right? I will tell you that also what are the keys is used for running the cell, right? ऊपर वाले एग्जांपल में हम लोग ने सिर्फ एक सिंगल स्ट्रिंग प्रिंट किया था, but in the second example let I print two different string. Pardon, this is the first string, sorry, this is the second string. And yeah, you have to remember one thing. Agar you are going to start with the single quote, then you have to end with the single quote. If you are start with the double quote, so you have to end with the double quote. Don't do like start with single or end with double. If you do this type of thing, they will show you an error, right? So be remembered about this thing. Here I'm going to give a one of these string like data sign. Yes, with the help of Alt Enter you will run this cell, or with the Control Enter also you will run this cell, right? So दो options है, but Alt plus Enter से करोगे आप तो आपका सेल रन भी होगा और उसके साथ आपको एक न्यू सेल भी आ जाएगा, right? और अगर Alt plus Enter के साथ Control plus Enter के साथ करोगे तो सिर्फ आपका जो ये सेल है वो रन होगा. मैं फिर से एक दिखाती हूँ. मैंने ऊपर वाला जो सेल है वो कंट्रोल प्लस एंटर से रन किया था, बट अगर मैं प्रिंट हाई यहाँ पे you look at this, we only have a one single cell present here right now. But if I'm going to run this cell with the help of alt enter, so एक न्यू सेल भी मिला और प्रिंट भी हो गया हमारा सेल, राइट? सो ये एक शॉर्टकट है और एक क्विक सा वो है कि आप जल्दी से रन भी कर सकते हो और एक न्यू सेल भी यू कैन इंसर्ट वन न्यू सेल आल्सो, राइट? सो दिस इज द प्रिंट फंक्शन, और प्रिंट फंक्शन के साथ वी हैव वन पैरामीटर विच इज द सेपरेटर. सो सेपरेटर क्यों यूज होता है? सेपरेटर बेसिकली इसलिए यूज होता है इफ यू हैव टू डिफरेंट स्ट्रिंग्स, सो वो दो डिफरेंट स्ट्रिंग को सेपरेट करने के लिए आप यूज कर सकते हो. और वो सेपरेट कैसे करोगे? या तो नन से करोगे, कुछ नहीं, या तो कोई वैल्यू आपको ऐड करना है, कोई स्टेटमेंट ऐड करना है तो आप यूज करोगे. So I will show you the example for the separator. Like I'm going to do a hello, this is the one string with the help of comma, and I'm going to give a one another string world, and with the sep I'm going to add to my, right? So alt plus enter. So hello to my world, मेरा सेपरेटर की वैल्यू क्या थी? टू माई. तो दैट्स वाई ये दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में मेरा जो सेपरेटर है वो यूज हो गया. तो ये वर्क करता है सेपरेटर. और कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे आपको यहाँ पर देना हो, सो लेट मी टेक हियर एस्ट्रिक. So as you can see the output, so separator is used for the for dividing the two string with some of the values, right? Blank lines, blank lines क्या, अगर आपको कोई भी
प्रॉब्लम है और प्रोग्राम यूज कर रहे हो और वेबसाइट बना रहे हो और उधर जरूरत पड़े कि ब्लैंक लाइंस प्रिंट करनी है, सो हाउ यू आर गोइंग टू प्रिंट द ब्लैंक लाइंस, और ब्लैंक लाइंस कैसे प्रिंट करनी है। और अगर आपको न्यू लाइन में जाना है, ठीक है, एक मैसेज आप टाइप कर रहे हो बट आपको न्यू लाइन में rest of the message show करना है, so how you come to the next line, so for that this is the parameter, so this is the sequence, this is the one of the thing is used as a new line, as this is the character used for the new line which represent that the rest of the sentence has to come in a new line. Remember this, you have to do this type of characters, like this is not acceptable. If you do this thing, they will give you an error. So remember the escape sequence properly. This is the correct one, right? So firstly, I'm going to print a single blank lines. यहाँ मैं 3 blank lines दे रही हूँ, right? So that's why I write 3, because I am going to print 3 blank lines, and with the quotation I'm going to this character. Alt plus enter, output, we got an output with 3 blank lines, right? Doing this thing, we have one another method also. With that also you can do, this is the next method or a different method. सो ये भी वही सेम चीज प्रिंट करके देगा, यहाँ पे आपको 5 ब्लैंक लाइन्स प्रिंट करके देगा, क्योंकि हमने जो ये न्यू लाइन का कैरेक्टर है ये 5 बार टाइप किया, 1 2 3 4 5. सो लेट मी टेक टू द ऑल्ट प्लस एंटर, एंड जैसे देख रहे हो आप लोग, we got an output with 5 different blank lines. Here I'm going to do this thing with the help of string. Welcome /n to /n my /n channel. सो हर स्ट्रिंग न्यू लाइन में आई है, राइट? ये आपका टाइम यहाँ पे इसने बचाया है. यू नॉट हैव टू बी प्रिंट लाइक प्रिंट वेलकम, प्रिंट टू, प्रिंट माय, प्रिंट सो एंड सो. सो यहाँ से एक ही सेल में एक ही मैसेज में विद द हेल्प ऑफ /n you will do the same exact thing, right? So this is the use of /n, and it is मतलब इजी है ये पैरामीटर के साथ में वर्क करना बहुत इजी है, अदरवाइज इट टेक्स अ लॉट्स ऑफ टाइम टू राइट ईच एंड एवरी स्ट्रिंग इन न्यू लाइन, राइट? So let me come to the another parameter which is the end command. What is the end command? End command क्या है? Let me check with the example. Basically end command कुछ नहीं है, बस आपको लास्ट में as a end character और end value आप क्या करने वाले हो वो आपको देना है. यहाँ पे suppose I'm giving a so many space, और यहाँ एक और string मैं टाइप कर रही हूँ to my channel, right? And here also I make a use of end function. Here I'm going to give a string. So let me check the output. As you can see, एंड में मैंने इतने सारा स्पेस दिया है, तो उतने जितने स्पेस मैंने दिया एग्जैक्ट उतने स्पेस हमें आउटपुट में आएंगे, और उसके आगे की चीज हमें आई है टू माई चैनल, एंड यू कैन सी द एस्ट्रिक. इफ आई एम गोइंग टू गिव हियर सम स्पेस and look at the output. So this is the beauty of end commands. That's it. I hope you understood each and every command. So that's it for today video. I hope you like it. Thank you for watching, and make sure to subscribe my channel and hit the bell icon for the new uploaded videos. So that's it. Thank you. See you in the next video.